Hello everybody, welcome to iExamB. Embrace the iExamB learning experience. In this video, I'm going to address some of the most common queries that the students are having right now when their notification has come. The first, most important query that the students are encountering right now is there are only 5 vacancies. The competition is very high. Should I not prepare? Now, I cannot answer this question for you. But please understand one thing, the competition will always be there. The vacancies may vary and you cannot predict it. Next time there could be more vacancies, there could be less vacancies. If you see over the past years, the trend of vacancies, in 2020 there were 34, 2022 में 16 ही थी, students में से 16 were less. Then in 2023 there were 25 और अब 2024 में सिर्फ 5 vacancies हैं. Indeed it is less. बट द रिक्रूटमेंट हैज़ कम अगेन. एक साल भी नहीं हुआ अभी और फिर से रिक्रूटमेंट आ गया है विद ओनली 5 वैकेंसीज. द 2023 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ज्वाइन फ्रॉम 1st of March और अभी आपके पास एक और रिक्रूटमेंट है with only 5 vacancies. Now I understand the dilemma. You must be worried that how you will prepare for the exam, that whether you have that enough caliber, enough preparation to give this exam this year. उसकी जगह अगर आप ये सोचो कि आपको एक सीट चाहिए और आपको उस सीट के लिए प्रिपरेशन करनी है, wouldn't that be a good thing? Now students are thinking 5 में से 2 या 3 वैकेंसीज ही होंगी जो जनरल कैटेगरी के लिए होंगी. Indeed, that is a possibility. Last year 11 वैकेंसीज थी फॉर जनरल कैटेगरी. कंपटीशन लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा था. अगर आप देखोगे 11,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था फॉर 25 वैकेंसीज. इस बार भी आपको 8-9,000 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे फॉर 5 वैकेंसीज. सेलेक्ट तो फिर भी 25 या 5 जितनी वैकेंसीज है उतने ही होते हैं. वेदर यू विल बी इन द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और नॉट, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर यूजिंग योर टाइम. कमिंग टू द सेकेंड क्वेरी, विल द पैटर्न और सिलेबस चेंज अगेन? 15 मार्च को एडवांस इंटीमेशन आ गई थी. डिटेल्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 13 अप्रैल को आएगी. अब इस टाइम पीरियड के दौरान अगर आप बैठकर ये सोचेंगे कि पैटर्न चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, जिसके चांसेस बहुत कम है, अभी 2023 में ही चेंज हुआ था, तो आप अपना सारा टाइम वेस्ट कर देंगे. दिस इज अ बोनस टाइम दैट इज गिवन टू यू और आप पर डिपेंड करता है कि आप इस टाइम को कैसे यूज करें. द नेक्स्ट क्वेरी इज व्हाट विल बी द डेट ऑफ एग्जाम. एक्सपेक्टेड डेट इज अराउंड जून. जून में आपका फेज 1 होगा. देन फेज 2 इज एक्सपेक्टेड इन जुलाई. There are more than 2 months in your hand to prepare. It could be 1 week more, it could be 1 week less. So just sit and study right now. Then, is there enough time to prepare? Yes, there is. Haven't you still gone through the success stories of last year's selected candidates? Mrinal was there, Raghavendra was there. These students cleared the exam with just 3 months preparation. So why you cannot do it? तब तो नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ 45 days होते थे till phase 1. This time you have more than 2 months. So there is enough time to prepare. You will have to do selective study. You will have to strategize your preparation and accordingly be consistent, be dedicated. Now there are 2 categories of students and you can be one of them. One is who has already started studying seriously from 15th of March. उससे पहले भी पढ़ रहे थे. 15th of March से वो जी जान लगाकर पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं. They are not worried कि क्या होगा, कब डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आएगा, क्या पैटर्न चेंज होगा, उनको उससे फर्क नहीं पड़ता. अभी जो इन्फॉर्मेशन उनके हाथ में है वो पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं. इट हैज़ बीन अ वीक. उनका कंपनीज एक्ट या सिक्योरिटीज लॉ कुछ पोर्शन खत्म होने वाला होगा. पेपर 1 की तैयारी भी चल रही होगी. सो दीज आर द स्टूडेंट्स हु आर कंसिस्टेंट, हु आर डेडिकेटेड, हु डोंट वरी अबाउट irrelevant थिंग्स and they are going to give their best for this year exam. The second category of students that we'll be talking about is those who are worrying about all these irrelevant questions. The things which are not in your hand. आपके हाथ में पढ़ाई करना है, पढ़ लो. एक्स्ट्रा टाइम मिला है, यूज़ कर लो. फेज 1 के सारे टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अपने लिए स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर लो, अपने लिए टाइम टेबल प्रिपेयर कर लो. ऑलरेडी 6 days हैव पास्ड. आप ऐसे सोच कर एक हफ्ता और निकाल दोगे, 10 दिन और निकाल दोगे. The students which have started their preparation have already covered quite some syllabus when you might choose to start your preparation. Now it is in your hands in which category of students you want to fall. और अगर आप इस anxious category वाले students में हो तो आप फिर next year recruitment का वेट करोगे. फिर आप लोग पहले students होते हो
जो रिक्रूटमेंट खत्म होता भी नहीं है और पूछते हो अगले साल आएगा, 2024 में फिर से आएगी रिक्रूटमेंट, 2025 में नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा. So just take a decision for yourself right now. And in order to help all those students who seriously want to prepare for 2024 exam, who want any form of guidance, we are starting a new batch, SEBI Grade A Legal Crash Course from 22nd of March. You can join this batch, you can enroll in our course. Also, the first class in this course will be intro class explaining about the exam and the strategy to prepare for this exam. And the second class in this course will be discussion with selected candidates. We are bringing one 2023 selected candidate to have a discussion with the enrolled students, with the students of this batch. You can ask any of your queries from the selected candidate related to preparation, related to strategy, related to how to use the SEBI legal course, what sequence to follow, what subjects to be stressed upon. So you can ask all your queries from the selected candidates on Saturday at 12 pm, 23rd March, Saturday 12 pm. In order to join this session, you will have to enroll for the batch. You will have to start your preparation. In 2023, 12 of our students got selected as SEBI legal officer, and we are so proud to be a part of so many successful journeys. I hope this video is an eye-opener for you. We at iExamB help you prepare 50% faster with a crisp and concise content. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.